ओके सो दो मेन चीज़ें आज हमारे एजेंडा के ऊपर वन इज़ दी ओपन सोर्स टूल्स का क्या लैंडस्केप है एंड द अदर थिंग इज़ कि हम आर यूजिंग दोज ओपन सोर्स टूल्स एज वेल एज अ मिक्सचर ऑफ Azure and ऑन प्रेम डिफरेंट किस्म के मिक्स एंड मैच किस्म के आर्किटेक्चर्स वगैरह हो सकते हैं या इवन अगर टोटल Azure के ऊपर एंड टू एंड आर्किटेक्चर बना हुआ है हम एंड टू एंड पाइपलाइन देखेंगे ऑफ यूज केसेस not just limited to ML but from data conception to final visualization and insight delivery. ठीक है तो ओपन सोर्स टूल के लैंडस्केप के अंदर जाना इस तरह से ज़रूरी है क्योंकि इवन दो द एग्ज़ाम DP100 is mainly about a machine learning service जो कि Azure के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अवेलेबल है और मशीन लर्निंग सर्विस को यूज़ करके आप काफ़ी ML ऑप्स का काम करते हैं बेसिकली आपने पूरी की पूरी एंड टू एंड मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल की ऑर्केस्ट्रेशन करवानी है उस चीज़ का आपको इसके अंदर नॉलेज मिला थ्रू आउट बट इट डज एक्सपेक्ट Microsoft does expect you to come from a data science और machine learning background और उस expectation के साथ ना ये भी एक unsaid किस्म का prerequisite attach हो जाता है कि the tools other than Azure machine learning जो कि open source market में available है the tools of the trade in the data science industry उनका कम से कम आपको idea है at least you know कि वो कौन सी चीज़ें हैं और उनका काम क्या है even if you haven't worked with each and every one of them अगर आप एक एक टूल को पकड़ के उसके साथ एक्सपीरियंस जाएंगे it would probably take you years to get familiar with all of them so that उस किस्म की एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है बट एक्सपेक्टेशन कम से कम इतनी है कि you know what the tool does और उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो राइट सो इस वक्त जो आपको इस स्लाइड के अंदर मुख्तलिफ टूल्स नजर आ रही हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज नेम्स शुड साउंड प्रिटी फेमिलियर टू यू एटलीस्ट डेटा रैंगलिंग के अंदर हमारे पास बेसिक्स से अगर मैं शुरू करूं तो numpy से शुरू होता है which is which provides the basic data structures for number crunching and those sort of things scipy के अंदर उसके ऊपर काफ़ी build करके numpy के ऊपर ही build करके काफ़ी statistical methods वगैरह implement हुए हैं और वो वाली libraries available हैं pandas again काफ़ी popular framework है of wrangling with the data और उसके डेटा फ्रेम्स को यूज़ करके हमने इवन कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया है राइट सिमिलरली कोर्स के अंदर ही हमने साइकिट लर्न जो टूल जो हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क एक अवेलेबल है साइकिट लर्न का पाइथन के अंदर उसको भी हमने एक्सप्लोर किया हुआ है और इसको यूज़ करके काफ़ी एक डाइवर्स रेंज ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम K-मीन्स क्लस्टरिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग उसके अलावा भी इसके अंदर मशीन लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए जो ऑक्सिलरी टाइप फंक्शंस बनते हैं मसलन मॉडल वैलिडेशन के अंदर जो फंक्शंस काम आते हैं जो मेथड्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं डेटा को अपने ट्रेन और टेस्ट सेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के वो काफ़ी ज़्यादा साइकिट लर्न के अंदर रैप हुए आपको मिल जाते हैं तो दिस इज़ अ रियली यूजफुल लाइब्रेरी फॉर एनीवन टू नो और इसके साथ तो डेफिनेटली आपकी फेमिलियरिटी जो है ना कम से कम Azure एक्सपेक्ट करेगा उसके अलावा चंद हमारे पास मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं पॉपुलर PyTorch TensorFlow Keras इसके अलावा एक MXNet भी है most of these machine learning frameworks are basically directed
बेसिकली डैग्स बनते हैं आपके ग्राफ कंप्यूटेशन के ऊपर जो है ना, ये फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन किए हुए हैं जिसके अंदर आप अपनी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को एक कंप्यूटेशन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो और उस पूरे ग्राफ को बाद में एग्जीक्यूट करते हो, स्पीकिंग अबाउट टेंसरफ्लो इन पर्टिकुलर, जिसके अंडरलाइन पूरा मैकेनिज्म ये है कि आप your code does not run directly. Your code first constructs a computation graph depending on the instructions that you've provided, और उसके बाद उसकी execution at the end when you initiate it, then it starts. और इन तीनों frameworks को use करके you can even code the deepest of neural networks, or yeah, you should be familiar with these names, and you should know कि neural network modeling के अंदर these three would come in handy. और अगर किसी केस स्टडी के अंदर आपको नजर आ जाए या किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऑप्शन में कोई नजर आ जाए, तो don't get confused, just know that it's just a machine learning framework which is most probably being used for running neural networks in the context, right? Uh, इसके अलावा हमारे पास कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स हैं ओपन सोर्स. मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी जिसको यूज करके हम ग्राफ्स वगैरह पाइथन के अंदर रहते हुए हम बिल्ड कर सकते हैं. और सीबॉर्न सिमिलरली इज आल्सो ए पाइथन लाइब्रेरी जो कि मैटप्लॉटलिब से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है करती है, बट इसकी काफ़ी फंक्शनैलिटी जो है ना वो ज़्यादा, if you go on the look and feel and even some of the visualizations that can be built on top of it, so Seaborn is quite a bit more mature than Matplotlib in my opinion. कुछ फीचर्स मैटप्लॉटलिब के बेहतर हैं, कुछ सीबॉर्न के बेहतर हैं. और इवन दो ये दोनों सिर्फ आपके पाइथन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, you could be expected to know you know visualization tools and tools which are external to Python. यानी कभी भी एंड टू एंड केस स्टडी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट या इवन कोई और भी क्लाउड प्रोवाइडर फॉर दैट मैटर, अगर आप कोई और क्लाउड सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम कल को अटैम्प्ट करते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ अपने फ्रेमवर्क के ऊपर रहें या सिर्फ पाइथन के फ्रेमवर्क्स तक अपने आप को लिमिट करें. दे वुड एक्सपेक्ट यू टू नो कि अच्छा उसके अलावा और कौन सी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी आपने अपना विजुअलाइजेशन का काम फॉर इंस्टेंस फ्रंट एंड टीम को के ऊपर आपने डाल दिया है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट एंड टीम के ऊपर आती है कि जो डेटा आप उन्हें प्रोवाइड करें उसके ऊपर वो लोग विजुअलाइजेशंस बिल्ड करें इंस्टेड ऑफ द डेटा साइंटिस्ट बिल्डिंग विजुअलाइजेशंस देमसेल्व्स. तो d3.js टाइप जो आपके पास libraries available and those are pretty nifty in that avenue. उसके अलावा the few things that I have forgotten to list down here but are useful nevertheless to know are full आपके जो mature किस्म के visualization tools हैं जो कि BI इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. और फॉर इंस्टेंस माइक्रोसॉफ्ट का अपना टूल है पावर BI, जिसके साथ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा कनेक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं, और उन डेटा कनेक्टर्स को यूज़ करके आप मल्टीपल सोर्सेज से बी दैट ऑन प्रेमिस और बी दैट ऑन क्लाउड, आप उन सोर्सेज से डेटा फैच कर सकते हैं, उनके ऊपर विजुअलाइजेशंस वगैरह बिल्ड कर सकते हैं. पावर BI के अलावा यू हैव आल्सो द ऑप्शन ऑफ यूजिंग क्लिक, दैट्स QLIK. क्लिक के अलावा यू हैव टैब्लो व्हिच इज आल्सो वेरी पॉपुलर विजुअलाइजेशन टूल जो कि मार्केट के अंदर यूज किया जाता है, एंड दोज आर पेड टूल्स बेसिकली. When we talk about Click or Tableau or Power BI,
किसी न किसी लिमिटेड फंक्शनैलिटी के अंदर आई गेस टैबलो और पावर बीआई के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं, बट इफ यू हैव टू provide an end-to-end scalable solution, then you would have to purchase a license. So the point of going over all this list is that you should not be caught unawares if any of these tools comes up on the exam, or uh, basically it should not come as a surprise to you, and you should at least recall के अगर कोई टूल मेंशन किया जा रहा है इस तरह एग्जाम के अंदर तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है. ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मे बी यूर रीडिंग ग्रीक और समथिंग. So that was an overview of the open source machine learning tools. इसके अलावा what I would also like to go over are some of the big data open source tools, which can be a bit I mean this screen can be a bit overwhelming at first sight, but again you don't have to know a lot of the uh, details of the functionality. You don't have to even know the nitty-gritties of the working of these things. You just have to know the use case जिसके अंदर ये टूल काम आएगा, और जहाँ पे कहीं obvious गलत चॉइस कोई दी जा रही है. For instance, Apache Kafka and Flink are used for data streaming. सही है. So अगर कोई आपको ऐसा ट्रिक आंसर शो किया जा रहा है मल्टीपल चॉइस के अंदर कि जहाँ पे you are using Apache Kafka for maybe querying data, then you should obviously know that that's a wrong choice. So in tools के ऊपर भी one by one I'll go over. I have also added a link here to an article, to a very useful article to read briefly about all of the tools mentioned here. But in a nutshell, if you want to do stream processing, you have multiple options available in the open source Apache market. जिसके अंदर आपके पास Apache Kafka is used for stream processing, Apache Flink is used for stream processing. Storm also provides stream processing functionality. Basically boundless streams जो हैं वो आप उस use case के अंदर Apache Storm बैठता है. Similarly, Samza and Scoop also provide data ingestion capabilities, but Scoop वाली site के ऊपर you wouldn't be handling streaming use cases. Instead, इस तरह के टूल जो हैं वो बैच डेटा इंजेक्शन या लार्ज स्केल डेटा इंजेक्शन के लिए सूटेबल हैं. If we talk about Scoop and stuff, right? Similarly, we have some data storage tools. Many of you who are working in the software industry, you could be familiar with some of these names here. But Cassandra is basically your columnar store. आपका columnar storage provide करती है आपको, और similarly Hive भी आपका एक जो है ना big data store के तौर के ऊपर काम करता है, and you can store your structured data in Hive, और big data queuing capabilities जो है ना Hive के ऊपर you can implement those really well. MongoDB similarly अगर आप unstructured semi-structured data के साथ काम कर रहे हैं, MongoDB would be the option to go, और उसके अंदर आप data store करेंगे. Apache Kudu is again an option to store your data, alternate to Hive. कुछ छोटी मोटी उसके अंदर there are a few trade-offs. कुछ छोटे मोटे nuances हैं in the difference of use cases where you would use a Hive instead of Kudu. Elasticsearch is your unstructured
अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट स्टोर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके यू नो लॉग इंजेक्शन टाइप जिस किस्म के यूज़ केसेस आते हैं, जिस किसी ऐसे यूज़ केस के अंदर काम आता है जहाँ पे आप काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपको पार्स टेक्स्ट पार्सिंग और उसको पार्स करके मुख्तलिफ फील्ड्स वगैरह के अंदर अगर आप स्टोर करके उसके ऊपर क्यूरीज बिल्ड करना चाह रहे हैं, और यू नो इट्स रियली कॉमन इन अ लॉट ऑफ लॉग मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस। इलास्टिक सर्च के बारे में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, in fact AWS found Elasticsearch so useful and so compelling, और उसके इतने use cases निकले हैं कि AWS even provided a dedicated service for hosting Elasticsearch. It's uh, yeah. So so once you've ingested and stored your data, और किसी न किसी यूज केस के अंदर आपको you'd have to choose one or a combination of these tools for ingestion and storage, तो उसके ऊपर आपको सर मेरा एक क्वेश्चन है, अपाचे काफका और अपाचे फिलिंग डेटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है, अपाचे स्टॉर्म भी डेटा फिलिंग स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। ये अपाचे स्टॉर्म इज अ पार्ट ऑफ हडूप and Apache Kafka is a part of Apache Spark. Kafka is not a part of Spark. They are separate tools actually. All of these are separate tools. They are not built into each other. They are compatible with each other, but इनके अंदर इस तरह से नहीं है कि Kafka is a part of Spark. कॉमन यूज केसेस के अंदर इन्हें आपस में लिंक किया जाता है कि अगर आप कोई बिग डेटा प्रोसेसिंग का एंड टू एंड सोल्यूशन बना रहे हैं और उसके अंदर आपकी स्ट्रीमिंग यूज केसेस आ रहे हैं, तो कॉमन सॉल्यूशंस के अंदर आपने ये देखा होगा कि काफका से इंजेक्शन करें स्ट्रीम्स की और स्पार्क के अंदर स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू से रीड कर रहे हैं, कनेक्टर के थ्रू आपने कनेक्ट किया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन दैट काफका इज पार्ट ऑफ स्पार्क. Okay, moving ahead, Apache Impala similarly आपका एक क्यूरी इंजन है. Basically, अगर Pig और Impala की मैं बात करूँ, even Presto provides a query interface. Apache Pig ने completely एक आपको एक specific query language provide की हुई है for data stored in your HDFS type storage. इवन हाइव स्टोरेज के अंदर भी अगर आपने डेटा रखा है उसे भी आप बेसिकली आपकी पिग लैटिन वो लैंग्वेज का नाम है जिसके थ्रू आप क्यूरी कर सकते हैं. प्रेस्टो आपका एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस के साथ इसे लिंक करके उसके ऊपर क्यूरीज वगैरह बिल्ड करके टेस्ट कर सकते हैं. और Apache Spark एक आपका बहुत पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप you can work with big distributed clusters for processing large scale data. और अगर आपको इन टूल्स के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू आइदर first of all go through the link provided at the bottom. You'll see a read more link at the bottom of the slides. आप वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं if you find any one of these confusing, या किसी दो टूल्स के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर you can, if you are interested for your own learning, you can even go tangential to the exam और थोड़ा बहुत ज़्यादा इनके बारे में in depth, you can Google about them, read some articles of their use cases, or that's one way to find out more about these tools and इनकी applications क्या हैं. But from the exam perspective, my personal opinion is, and I have found it so even in the AWS exams,
कि just knowing what these tools do, just knowing the rough idea of what's the application of this tool. Does it do stream processing? Does it do batch ingestion? ये वाइड कॉलमनर स्टोर है या फिर ये आपका डॉक्यूमेंट स्टोर के तौर के ऊपर एक्ट करता है. Just knowing these things and knowing how to fit these tools on top of the kind of data you're getting in a case study, that is enough to get you by in the exam. क्योंकि अगेन इस किस्म के एग्ज़ाम जो हैं वो ज़्यादातर इन क्लाउड प्रोवाइडर्स ने अपने ही अपनी सर्विस के अराउंड डिज़ाइन किए होते हैं. सो मसलन अगर मैं ये DP100 की बात करूँ, दैट इज़ डिज़ाइंड entirely around the Azure machine learning service, और हमने फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर्स हमने बात ही उस सर्विस की और उसके फीचर्स की है और क्या क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है उस सर्विस के अंदर, हमने उसकी की है. सिमिलरली अगर मैं AWS मशीन लर्निंग स्पेशलिटी की बात कर रहा होता तो मोस्ट ऑफ इट वुड हैव बीन स्पेंट अराउंड SageMaker, और AWS SageMaker की फंक्शनैलिटी के ऊपर हम लोग बात करते रहते. बट जो उसके अलावा ये बाकी सारे के सारे टूल्स हैं जो हमने ओपन सोर्स कुछ डिस्कस किए हैं, just knowing their application, just knowing what category they fall into, is enough for these exams. So as long as we're talking about open source tools, it's really important to talk about orchestration as well. Or I mean, it's one thing to set up a tool और उस tool के अंदर आपने कोई script वगैरह लिख दी है, but अगर आपने कोई scripts लिखी हुई हैं या कोई आपने jobs design करके वहाँ पे रखी हुई हैं, you have to have the capability to also trigger those jobs or those scripts at the right time, और कहाँ से डेटा लेके कहाँ पहुँचाना है और उस सारे साइकिल के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो रही हैं. अगर आपका एक टूल ऑफ क्लाउड पड़ा हुआ है और एक टूल आपका क्लाउड के ऊपर है, तो इस एंड टू एंड वर्कफ्लो की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक सिंगल इंटरफेस अवेलेबल है या नहीं, वो वाली सारी की सारी जो चीज़ें वो आपकी ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स जो है ना वो मैनेज करती हैं. और डेटा ऑर्केस्ट्रेशन के लिए आजकल जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं उसके अंदर अपाची नाइफाई इज़ वन ऑफ देम, और उससे पहले भी चलता रहा है अपाची एयरफ्लो, और इट इज़ स्टिल प्रिटी मच वेरी पॉपुलर टूल. इन टूल्स के अंदर यू हैव द एबिलिटी टू ट्रिगर jobs or workflows written in any sort of cloud environment. मसलन Apache Airflow को use करते हुए you can manage ingestion from a maybe a Kafka cluster जो कि आपका on-prem चल रहा है, और उस Kafka cluster से आप ingestion करवा रहे हो, या आपका कोई talent cluster अगर आपका on-prem चल रहा है for ingestion, और उससे आप ingest करवा रहे हो to maybe the Azure environment, और Azure के अंदर आप उसे maybe you would be storing that in your blob storage, या Azure की data lake storage के अंदर अगर आप वहाँ से data save करवा रहे हो, और once that data gets stored, तो उसके बाद you would need to maybe process that data using a Databricks cluster, या आपका कोई अगर आपने Kubernetes के cluster को use करके Spark का एक क्लस्टर डिप्लॉय किया हुआ है, तो उसकी जॉब की ट्रिगरिंग होगी once that data has been transferred into the data lake. तो इन सारे स्टेप्स को मैनेज करने के लिए ये वाले ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स जो है ना उनके अंदर you have the option to programmatically as well as graphically be able to create these flows which might be spread across multiple domains, multiple networks as well. और
ये तो बात हो गई आपके डेटा ऑर्केस्ट्रेशन की और डेटा प्रोसेसिंग की, बट मशीन लर्निंग का हमने स्टार्ट से ही कोर्स में देखा है कि मशीन लर्निंग की ऑर्केस्ट्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी ही और है। उसके अंदर हमने डेटा क्लीनिंग, डेटा मिसिंग डेटा की इम्प्यूटेशन वगैरह से लेके मॉडल की ट्रेनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और सर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना होता है, जो कि एयर फ्लो या सर नाइफ ऐसा है। टूल्स जिनके लिए बिल्ट नहीं होते। और मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज के लिए फिर जैसे हमें एज्योर मशीन लर्निंग सर्विस ने हमें मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड की हुई है अबाउट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग या डेटा इम्प्यूटेशन या फिर सर मेरा मॉडल। भी क्वेश्चन है। जी श्योर, गो अहेड। जी, अपाची नाइफ और अपाची एयरफ्लो ऑन प्रीमिस डेटा इंजेक्शन करता है क्लाउड पे या फिर क्लस्टरिंग किसी क्लस्टर एनवायरनमेंट, मतलब सही या है? इट कुड बी, इट कुड बी, और मतलब इसके मल्टीपल यूज केसेस बन सकते हैं। ईटीएल के लिए यूज होता है ये, ईटीएल लाइक प्रोसेस। अगर आपने एक एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ETL प्रोसेस लिखा हुआ है ना, जो कि विच इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल टूल्स एंड मल्टीपल मे बी इवन डेटाबेसेस, सही है। सो फॉर इंस्टेंस एक आपका ETL प्रोसेस ये हो सकता है कि आपके मल्टीपल ऑन प्रेम डेटा सोर्सेज पड़े हुए हैं। मे बी यू आर लुकिंग एट ए टेलको, ठीक है, और टेलको के टेलकोस के अंदर यू हैव मल्टीपल डेटा सोर्सेज जहां से आप डेटा इंजेस्ट कर रहे होते हो। कोई एक डेटा बेस नहीं होती। आपके कस्टमर का मैन जो डेटा है वो अलग से हो रहा होता है, CRM सिस्टम से डेटा अलग से आ रहा होता है। आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स और जो आपके वो वाले वेंडर्स हैं उनसे डेटा आपका अलग से आ रहा होता है, वगैरह वगैरह। मतलब आपकी मल्टीपल डेटा बेसिस होती हैं और वो अ, मतलब आपने ऑन प्रेम रखी हुई है, राइट। और राइट। उन सारे डेटाबेसेस से मे बी यू वुड वांट टू इंजेस्ट डेटा इनटू योर सेंट्रल डेटा वेयरहाउस, सही है। और आइदर आप सेंट्रल डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा मूव करना चाह रहे हो या अपने डेटा लेक के अंदर डेटा मूव करना चाह रहे हो, और फिर एक बार वहाँ डेटा वेयरहाउस में या डेटा लेक के अंदर आपका वो डेटा इतनी सारी डेटाबेसेस से आ जाता है, तो फिर मे बी आपका कोई ना कोई स्पार्क की कोई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जॉब्स चलेंगी, जो उन मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल टेबल्स और डेटाबेसेस से जो डेटा आ रहा है उनको ज्वाइन करके एक सिंगल व्यू क्रिएट कर रहा है, जिसके ऊपर मे बी आप रिपोर्टिंग वगैरह बाद में कर सको, या जिसके ऊपर कल को आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड कर सको, ठीक है। तो ये जो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक एक ETL प्रोसेस और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस शुरू हुआ है ना, इस सारे की ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यू वुड बी यूजिंग अपाची नाइफाई या एयरफ्लो टाइप टूल्स, ठीक है। सर जो काम जो काम ये इस किस्म के जो काम नाइफाई और एयरफ्लो नहीं कर सकते ना, वो अगेन आपकी मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल की ऑर्केस्ट्रेशन है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है in hyperparameter tuning, in model versioning, in your आपके डेटा ड्रिफ्ट वगैरह को मॉनिटर करना, इस किस्म की जो आपके मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के अंदर जो ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए ना, उसके लिए स्पेसिफिकली बिल्ट टूल्स हैं आपके पास ओपन सोर्स के अंदर। अगर मैं बात करूं तो दोज वुड बी क्यूब फ्लो या ML फ्लो। Kubeflow is built on top of Kubernetes, और Kubernetes के ऊपर मतलब एक पूरा framework create किया हुआ है, just like more or less along the same lines of Azure Machine Learning Service, Kubeflow create किया हुआ है। और similarly ML flow आपका machine learning workloads की orchestration के लिए create किया हुआ है on top of Databricks। और Databricks का अगेन वही यूज केस है कि Databricks आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है ऑन टॉप ऑफ योर स्पार्क क्लस्टर्स, ठीक है। और उन स्पार्क क्लस्टर्स के ऊपर बेसिकली आपकी मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह भी आप ट्रेन कर सकते हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग जॉब्स वगैरह क्रिएट करते हो। और अगर आप स्पार्क क्लस्टर के ऊपर अगर मशीन लर्निंग फंक्शनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, तो
तो डेटा ब्रिक्स के अंदर हमारे पास ML फ्लो की ऑप्शन अवेलेबल है टू ऑर्केस्ट्रेट द एंटायर मशीन लर्निंग प्रोसेस इन देयर. तो I hope you get the gist of what these orchestration tools are about. I haven't seen many exam questions, at least DP100 के अंदर जिसके अंदर ये वाले tools आए हों या मुझे नज़र आए हों, but it is still better to to know rather than be caught unawares. ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हमने ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स डिस्कस कर लिए हमने. कुछ मेजर बिग डेटा टूल्स डिस्कस कर लिए, कुछ हमने मेजर मशीन लर्निंग टूल्स डिस्कस कर लिए. नाउ इट्स आई थिंक टाइम टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द टूल्स एंड सर्विसेज जो कि Azure प्रोवाइड कर रहा है, जो कॉमन टूल्स एंड सर्विसेज जो कि मोस्ट रेलिवेंट होंगी फॉर आवर DP100 एग्जाम. और मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर यही वाली सर्विसेज घूम फिर के वापस आपको नज़र आ रही होती हैं. डिफरेंट तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया होता है और क्वेश्चंस को या केस स्टडीज़ को डिफरेंट तरीके से तरोड़ मरोड़ के आपके सामने दिया होता है. बट उसके अंडरलाइन जो सर्विसेज वगैरह अगर Azure के साइड से आती हैं, Azure क्लाउड की कुछ सर्विसेज आती हैं, तो वो यही सर्विसेज आती हैं. इनके अंदर भी you don't have to be an expert in all of these services. In fact, इन सर्विसेज इनमें से ज़्यादातर सर्विसेज के अराउंड हमारा DP200 एग्ज़ाम जो है that is built around most of these data services. और डेटा इंजीनियरिंग का के जो भी आप इसके ऊपर वर्कलोड्स वगैरह लिख सकते हैं, उस सारी एक्सपर्टीज को बिल्ड करने के लिए डेटा Azure का DP200 एग्जाम है अवेलेबल. So for DP100 you just have to be again aware of what is the use case of this tool, what is the application of this service. सही है. So स्ट्रीमिंग की हम एक बार पहले बात कर चुके हैं, अपाची फ्लिंक, अपाची काफका या अपाची स्टॉर्म की. बट अगर मैं Azure के अंदर बात करूं तो देयर आर टू मेन थिंग्स दैट आर अवेलेबल, थ्री इफ यू काउंट IoT हब, और अगर आप IoT से डेटा ले रहे हैं. बट स्ट्रीम एनालिटिक्स जो है दैट इज़ योर मेन स्ट्रीमिंग सर्विस जो कि Azure के अंदर प्रोवाइड की गई है. और इसको यूज करके यू कैन नॉट ओनली स्ट्रीम डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर, बल्कि इसको यूज करके आप इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म्स भी लिख सकते हैं एज सो दैट एज डेटा स्ट्रीम्स इन इट गेट्स प्रोसेस्ड एज इट इज कमिंग इनटू योर इकोसिस्टम. और इसको आप मल्टीपल देयर इज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज और टारगेट्स जिसके साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं स्ट्रीम एनालिटिक्स को, including many databases and you know orchestration tools. अगर मैं Azure की मैं बात करूँ तो you could use stream analytics for multiple kinds of use cases. इसको use करके आप alerting या डैशबोर्डिंग वो वाली सारी भी कर सकते हैं अपने स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर. आप इसको यूज़ करके स्ट्रीमिंग डेटा को अपने डेटा लेक तक पहुंचा सकते हैं. स्ट्रीम एनालिटिक्स को डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ डेटा वेयर हाउस इन Azure on top of Azure Synapse Analytics. डायरेक्टली SQL डेटाबेसेस जो Azure के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप स्टोरेज वगैरह इनेबल कर सकते हैं. Event Hub is more or less similar service. It does not provide you the capability to process data, but again इसके साथ इसका main use case वही है कि you would be streaming and ingesting events into your Azure ecosystem. Or once those events and once those streams have been brought in, तो फिर again आपके पास मतलब काफ़ी options available हैं. You can
डायरेक्टली स्टोर इट इनटू योर डेटा लेक और उससे आप लिंक करके आगे जो भी काम कर सकते हो. फॉर द मशीन लर्निंग सर्विस, जैसा कि हमने देखा था कि मुख्तलिफ किस्म के जो डेटा स्टोर्स अवेलेबल थे, उसके अंदर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो आपके डेटा स्टोर्स बनते हैं ना, वो या तो आपका ब्लॉब स्टोरेज या उससे मिलती जुलती कोई ना कोई आपकी स्टोरेज सर्विस बनती है. एज्योर डेटा लेक सर्विस इज बेसिकली बिल्ट ऑन टॉप ऑफ योर blob storage. So, so blob would be the most common use case uh, for any case studies that you might see. But you will also see data being brought in and stored into um, SQL database. Azure की SQL database जो है, that's the Azure's recommended data storage solution for structured and relational data. और आहिस्ता आहिस्ता इसे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेच्योरिटी और स्केलेबिलिटी की फंक्शनैलिटी ऐड करते जा रहे हैं. और it can handle both your transactional as well as analytical solutions जहाँ तक databases की functionality concerned है. It seems that eventually they might, they might join it up with Azure Synapse Analytics, और इन दोनों को combine कर देंगे किसी future point of time के अंदर. But let's see where they go. Right now it's also catering to the transactional workloads. Basically transactional databases वगैरह भी के use cases भी Azure SQL database पूरी कर रही है, जो कि Synapse के अंदर उस तरह से भी available नहीं है. Synapse is your data warehouse solution on Azure, जो कि again columnar type storage के ऊपर available है. I guess इसके अंदर there is also an option to configure it as a row type storage, but again whether it's columnar or whether it's row based, इसका use case वही है कि it will act as the data warehouse in any kind of solution. Data storage के अंदर the Cosmos DB might turn up a lot on the exam. और Cosmos DB इस वजह से क्योंकि आपकी ज़्यादातर जो NoSQL databases हैं वो Cosmos DB के अंदर बिल्ड की हुई हैं Azure ने. So Cosmos DB आपकी एक रैपर सर्विस है जिसको आप मल्टीपल डेटाबेस फ्लेवर्स के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस कैसेंड्रा DB भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. आप MongoDB की इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको ग्राफ टाइप डेटाबेसेस चाहिए, यू कैन इवन गो फॉर अ ग्रेमलिन फ्लेवर इन Cosmos DB. तो बेसिकली आपके जो भी NoSQL डेटाबेस नीड्स होंगी वो आप Azure के अंदर रहते हुए Cosmos DB से पूरे करोगे. और that's all you have to remember. You don't have to know the syntax of what kind of queries you'll have to write in Cassandra, Mongo or Gremlin, या उसकी configuration options वगैरह आप क्या रखेंगे. But you have to know the application. You have to know कि इनका use case क्या है. दो चीज़ें जो मैं यहाँ पे इस टेबल में मिस कर गया हूँ, उनमें से एक है Azure Function, जो कि Azure की सर्वरलेस प्रोसेसिंग सर्विस है. और जिसका मतलब है कि इसके अंदर कोई वर्चुअल मशीन या कोई एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर जो है उस तरीके से आपको प्रोविजन नहीं करना पड़ता. यू जस्ट हैव टू राइट योर कोड, और जब उस कोड को रन करने की ज़रूरत पड़ेगी यू विल ओनली बी चार्ज फॉर दैट. और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी इट हैज़ क्वाइट अ मैनी निफ्टी एप्लीकेशंस. कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपका इवेंट हब के अंदर कुछ इवेंट्स आ रहे हैं और उन इवेंट्स को स्टोर करने से पहले आप प्रोसेस करना चाहते हो या उनको एग्रीगेट करना चाहते हो, तो मे बी यू वुड बी पुटिंग देम इनटू एन Azure फंक्शन, और उसको कोड के थ्रू मे बी you would be doing some sort of pre-processing before it gets stored onto your storage solution. Databricks का मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ, but it's your Apache Spark based big data framework
आपकी बिग डेटा की सर्विस है जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू और स्पार्क के फ्रेमवर्क के थ्रू आपके लार्ज स्केल बिग डेटा प्रोसेसिंग के उस वर्कलोड्स को हैंडल करेगी और इट कैन आल्सो होस्ट अ नंबर ऑफ मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग टेंसरफ्लो इंक्लूडिंग पाइटॉर्च और इसी Azure के Databricks के ऊपर ही you can also deploy ML flow, but the exam DP100 does not expect you to know the nitty-gritties of how you would be writing code in Azure Databricks या Databricks के अंदर रहते हुए आप मशीन लर्निंग का पूरा ऑर्केस्ट्रेशन वाला वर्कफ्लो कैसे बिल्ड कर रहे हो सही है सो so that gives you a little bit of an advantage. You don't have to you know learn a lot of the details of these tools. You just have to know the application. So now that we have covered a lot of different tools to give you an idea of the case studies, यहाँ पे हमारे पास तीन फिलहाल आज की डिस्कशन के लिए वी हैव 3 केस स्टडीज और उसके अंदर हम हमारे पास एक एजूर का बेसिकली आर्किटेक्चर डायग्राम है और उस आर्किटेक्चर डायग्राम के के थ्रू हम लोग ये देख पा रहे हैं कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है और जो डिस्क्राइब किया जा रहा है जो भी ऑफरिंग हम बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली उसको उसको ये Azure की मशीन लर्निंग सर्विस कैसे हैंडल करेगी So for instance, if I want to build a recommendation engine, it could be, I think, जो actual Microsoft की website के ऊपर है, that's a real-time recommendation engine. और उसका पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब किया हुआ है मोर और लेस इसी तरह की केस स्टडी आपको लिस्ट डाउन की जाती है लॉन्गर देन दिस इफ यू हैव सीन the exam questions that the link I shared तो उसके अंदर the case studies might be a bit longer but studying case studies from here could help you a lot on your exam इसकी इस केस स्टडी की और इसके अलावा ये जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर के आर्किटेक्चर सेंटर के अंदर बेसिकली जो बाकी केस स्टडीज हैं उनकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी इस स्लाइड सेट के अंदर मैंने इंक्लूड कर दी है इससे पहले इसके अलावा ये जो एक बेसिकली एग्जाम डंप के चंद फ्री क्वेश्चंस थे इनकी लिंक मैंने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर की थी वो भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा सो दैट यू कैन टेक योर टाइम एंड रिव्यू दीज थिंग्स आराम से राइट But in short, let's discuss this case study. Case study ये है कि आपके कुछ आपने कोई किसी वेबसाइट के ऊपर मे बी कुछ होस्ट किया हुआ है. There are some items जो कि आपने होस्ट किए हुए हैं. It could be movies, it could be products that you're trying to sell on an online retail store. ठीक है. और मुख्तलिफ users उन items को rate कर रहे हैं. So the solution becomes कि अगर आपने उन रेटिंग्स की बेसिस के ऊपर नए आने वाले यूजर्स को या इवन पुराने यूजर्स को recommendations, personalized recommendations provide करनी है तो what you'd have to do is first of all you have to bring in the user and items rating data into your Azure storage or once it is in your Azure storage it could be और ये आपको Azure storage के अंदर लाने के लिए हो सकता है if you're bringing it in from an on-prem data source then maybe you could be using Apache Scoop or Azure's data factory for instance but once it's in your Azure storage you use your Azure data bricks cluster to do some sort of pre-processing, join certain tables और उससे आपको machine learning के लिए जो accordingly
मॉडल से रेलिवेंट जो आपको डेटा फॉर्मेट चाहिए, आप उस फॉर्मेट के अंदर डेटा को लेके आते हैं, and then you use Azure machine learning service to train a model on top of that. And once you've trained that model, you deploy that model on top of your Azure Kubernetes service. और जो अब पुराने जो हमारे पास यूजर्स का एक्चुअली जो डेटा आ रहा था, वो साथ ही साथ हम Azure Cosmos DB के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं. और based on this, now whenever new users come in, they can just make a request to the model deployed on top of Azure Kubernetes service, और Kubernetes service उन्हें वो वाले items निकाल के दे देगी जो उन्हें recommend किए जा रहे हैं या उनके लिए सबसे ज़्यादा relevant बनते हैं based on whatever recommendation system model that we've trained in Azure Machine Learning Service. और इसकी फर्दर डिटेल्स वगैरह आप इस लिंक के अंदर स्टडी कर सकते हैं afterwards. There's another case study about personalized marketing. And personalized marketing is a use case that's close to my heart because I've worked a lot in this domain. But basically ये इसकी intuition ये है कि given it is somewhat close to a recommendation engine, but personalized marketing goes beyond that. In that it tries to sell something to you rather than just recommending stuff that could be good for you. It tries to sell you some stuff. और उस मार्केटिंग के लिए आप कुछ प्रोडक्ट अफिनिटीज वगैरह मॉडल करते हैं या ब्रांड प्रोपेंसिटीज वगैरह मॉडल करते हैं, और उन ब्रांड प्रोपेंसिटीज की बेसिस के ऊपर you basically return certain results to your users, or and then you basically read the data again and see the success on top of that. So इस केस के अंदर फॉर इंस्टेंस हमारे यूजर्स जो हैं वो ब्राउज़र के थ्रू हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन देयर इंटरैक्शंस हमारा एक Azure फंक्शंस का इंस्टेंस जो है वो ट्रिगर हो रहा है, जो कि इन सारी इंटरैक्शंस को उठा के इवेंट हब को दे रहा है, और जो कि Azure Stream and Analytics engine को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि which will aggregate our user interactions in real time and provide those insights to maybe your CRM team in a stream format. रियल टाइम अगर हम रियल टाइम के अलावा अगर हम नॉन रियल टाइम या बैच इनसाइट्स वगैरह देखना चाह रहे हैं, देन we would be storing those sort of things in our Cosmos DB, और उन इंटरैक्शंस के ऊपर हमने अपना डैशबोर्ड बिल्ड किया होगा पावर BI का या टैब्लो का, जिसके ऊपर हमारे जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं they would be, और relevant departments जो हैं they would be able to view these insights. But while these interactions are flowing in, हम हर यूज़र को उसके बिहेवियर के मुताबिक या उसके डेमोग्राफिक्स वगैरह के मुताबिक हम एक प्रोडक्ट अफिनिटी असाइन करके हम हाईएस्ट प्रोडक्ट अफिनिटी जिस भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आ रही है, हम वो वाले प्रोडक्ट्स उस यूज़र को दिखाना चाहते हैं और वो वाले प्रोडक्ट्स उसे रेकमेंड करना चाहते हैं. So for instance, if there is a user that comes in and starts viewing Harry Potter books, say, and he searches up two of the Harry Potter books, then my machine learning model should take my entire product base, और वो उस सारे प्रोडक्ट बेस के अंदर से ये देखती है कि ये दो हैरी पॉटर बुक्स के साथ उसने इंटरैक्ट किया है, then maybe the machine learning model would decide to show that user more Harry Potter books या more Harry Potter merchandise,
or that happens through the machine learning model, putting that insight into Cosmos DB, और Cosmos DB से again ये जो मेरा एक serverless Azure function चल रहा था, that reads and provides that marketing trigger to your browser, और वो वहाँ से आपके वो वाले relevant products वहाँ पे view करवा दे to the users. अगेन इसकी डिटेल्स वगैरह थोड़ा सा स्टडी करने के लिए या इसकी टेक्निकलिटीज अगर इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन अगेन फॉलो द लिंक एंड रीड अप ऑन इट, बट टाइम की भी हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी व्हिच इज कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन. और कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन में अगेन हमारे पास ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर आ रही है. चाहे आप रिटेल की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें, टेलकोस की बात करें, या हेल्थ केयर में अगर आप देखें, एवरीवन वांट्स टू मॉडल देयर कस्टमर चर्न्स, और उस चर्न प्रिवेंशन के ऊपर दे वांट टू डिप्लॉय सर्टेन स्ट्रेटजीज ऑफ एंगेजिंग द कस्टमर्स. बट द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग कि कौन से कस्टमर्स चर्न करने जा रहे हैं, कौन से कस्टमर्स बिजनेस के साथ एंगेजमेंट को टर्मिनेट कर देंगे सून. इस सिनेरियो में भी हम अगर अपनी कस्टमर इंटरैक्शंस किसी डेटा स्ट्रीम जी you are on. Okay, anyhow, so again in customers की भी interactions could be coming from a data stream and stream through your event hub and stream analytics, और इन interactions को आप store कर लेते हैं into an SQL data warehouse in this case study, in this scenario, और ये SQL data warehouse could be built on top of your Azure SQL service. Yeah, ये SQL data warehouse could also be built on top of your Synapse Analytics. But in order to use this to you know create churn predictions, you have to use machine learning, Azure machine learning service. और machine learning service के अंदर आप you can actually use the SQL service जो कि Azure provide कर रहा है. You can use it directly as a data store, और as a data store अगर आप उसे वहाँ पे attach करते हैं तो you can readily access your structured data in the form of a data set, और उसके ऊपर आप अपने मॉडल्स वगैरह और अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिप्लॉय कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और वहाँ से यूज़ कर सकते हैं. अगेन उसके ऊपर इंसाइट्स भी बिल्ड की जा सकती हैं इन योर पावर BI डैशबोर्ड. And once you have generated your customer churn predictions, आप उसे blob storage के अंदर append करो, या through blob storage, या directly you could also put them back in your SQL data warehouse and view those churn insights in your dashboard reports as well. So the thing is, ये केस स्टडीज में आपके साथ इस वजह से डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी तक जो भी हमने बात की है कोर्स के अंदर, जितनी भी डिस्कशंस चलती रही हैं, वो सिर्फ इस मशीन लर्निंग सर्विस के अंदर डिटेल के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस या ट्रिगर्स अवेलेबल हैं, इन चीज़ों को हम मशीन लर्निंग सर्विस के अंदर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं. हमारी मोस्टली कॉन्वर्सेशंस इसी सर्विस के अराउंड होती रही हैं. बट when it comes to testing your strength as a data scientist जो कि Azure के प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, then you also have to have this big picture view of how the data life cycle will look like end to end.
from where you're bringing it onto your platform, to how it gets processed and stored, to how you model it, to how you use those insights uh, and deliver those insights um, to your managerial class or your C-suite maybe. Uh, और आपकी केस स्टडीज जो है ना वो मोर और लेस इसी किस्म की आएंगी जिसके अंदर आपको इन डिटेल्स के अंदर जाके देखना पड़ेगा, एक पूरी केस स्टडी आपको डिस्प्ले की जाएगी. There are quite a lot of such case studies available on the Azure Architecture Center. इसकी भी लिंक यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है. If you open this up, you can go to the technology areas. Technology areas के अंदर you will see AI and machine learning. So there's a whole segment of AI and machine learning uh, pages on Azure to read. Technology guide को अगर आप पढ़ना चाहते हैं just to be better prepared, you can do so. Even though most चीज़ें हमने पहले से discuss करके cover कर ली हैं, but there are a lot of architectures. There are a lot of case studies that are available in this architecture center that have to do with AI and machine learning. So it would be a good idea for you guys to at least study a few of these, go over a few of these, figure out how these architectures are working, और एक बार ना अपने आप को किसी सिनेरियो बेस्ड थिंकिंग के साथ आप फेमिलियराइज कर लें कि जिसके अंदर आपको ये आइडिया हो जाए कि किसी भी किस्म का जो डेटा सोल्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर how are the architectural decisions being driven, how are the machine learning architectural decisions being driven as to how you do your data storage, do your data processing, और उस डेटा की प्रेडिक्शंस वगैरह को आप सर्व कैसे नॉर्मली करवा रहे होते हैं. सो वो वाली चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग चैटबॉट्स, इंक्लूडिंग कंटेंट रिसर्च, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस, image classification, if someone wants to take a look at how image data is being processed. तो वो वाली सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आपको you will be able to see those things. तो with that said, I would suggest for every one of you, it would be a good idea to at least study a few of these case studies. And जो question dumps मैं share करूँगा, I think within a day, उन question dumps को ज़रूर attempt करें. Attempt first before directly jumping into the answers and the explanations of those answers. But पहले खुद attempt करने की कोशिश करें. If you get something wrong, then go into the explanation. अगर आपको explanation से भी satisfaction नहीं होती, if you still feel कि कोई ना कोई मसले मसाइल ऐसे हैं या आपके जहन में कोई confusion ऐसी हैं जो कि जिसकी वजह से आप ये explanation समझ नहीं पा रहे या आपको लग रहा है कि ये explanation गलत है, then you can discuss with me or Ali for that matter. So with that, I would like to conclude today's talk. If any one of you has any comments or concerns, I would hear them now. Okay, so I guess there are none. I'll go ahead and share these slides and these links with you. आज या कल तक आपको question dumps भी मिल जाएंगे और मैं confirm करके on my to do list, it's the top of the thing right now
कि मैं कंफर्म करके डाइस की साइड से ये भी कंफर्म कर देता हूँ कि डाइस का टेस्ट आपका कब हो रहा होगा। डाइस वाला टेस्ट आपका सिर्फ इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड हो रहा होगा कि हु basically whoever clears the dice exam first, the dice filtering test first, they will be allowed to take the Azure exam. और जो आपके स्टार्ट में रीटेक पॉलिसी के बारे में क्वेश्चंस थे वो वाले क्वेश्चंस भी मैं डाइस की साइड से मैं कंफर्म करके आई विल पोस्ट देम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल सर ऑल्सो। सर मेरा एक क्वेश्चन था इवेंट हब और स्ट्रीम एनालिटिक्स के हवाले से, मैं पूछ सकता जी हूँ? इवेंट हब आपने बताया कि डेटा इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है और स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स डेटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होगा एज और या इवेंट हब इवेंट को प्रोसेस करता है या स्ट्रीमिंग भी है, क्योंकि उसके अंदर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं इवेंट हब में, इंजेक्शन सर्विस एंड स्ट्रीम। इस वजह से थोड़ा इंजेक्शन भी है और उसका स्ट्रीमिंग का भी यूज केस है। जी, स्ट्रीम एंड इवेंट, तो इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अच्छा, समझ में। हाँ, इट माइट सीम अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट इसके अंदर इवेंट इंजेक्शन की सर्विस एक अलग से बनाने का मकसद ये था कि कई एज्योर के भी ट्रिगर्स होते हैं आपके एज्योर की सर्विसेज के, ठीक है। और अच्छा, अगर आपका आपके उन ट्रिगर्स से कुछ इवेंट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं ना, तो वो भी डायरेक्टली इवेंट हब के अंदर एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। स्ट्रीम एनालिटिक्स के अंदर उस किस्म के ट्रिगर्स की डायरेक्ट वो अवेलेबल नहीं है, विच इज़ वाई इवेंट हब लाइक विंडोज इवेंट इन विंडोज। it could be Windows events, it could be Azure events, सही है। या इन इवन भी एजर एज। Azure events, यानी अगर आपकी फॉर इंस्टेंस अगर आपने डेटाब्रिक्स की कोई अगर जॉब चलाई है ना और वो जॉब फेल हो जाती है, then that is also an event। ओके, या Azure का फंक्शन अगर कोई आपने लिखा हुआ है और वो फंक्शन किसी एपीआई से ट्रिगर हो रहा है, if that function gets triggered and produces an output, that is also an event। ओके। Yeah, so with that I'll conclude this presentation। I'll say good luck to everyone for the exam, and do practice the questions that will be shared with you. Okay, guys, uh, take care and best of luck with the office.